I can start, ma'am. Yes, we are live. Good morning, good afternoon, good evening, all of you, all proud brand ambassadors. Welcome to our today's priceless moments with family. इस शो पर आप सभी को स्वागत है আপনাদের সবাইকে পুরো পৃথিবী থেকে যারা আমাদেরকে আজকে এই সন্ধ্যাকালীন সেশনে দেখছেন একটি এমন সেশনে যেখানে আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে অন প্যাসিভ এবং নিজেদের জীবনের কাটিয়ে তোলা কিছু মুহূর্তকে শেয়ার করব এবং আপনাদের মাঝে একটি আ গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটি অনুষ্ঠান তুলে ধরবো। তো চলুন আমরা सामने एगोई এবং আজকের এই সেশনটাকে শুরু করি। चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आज के इस प्राइसलेस मोमेंट्स को एंड हमारे बीच आज बांग्लादेश से हमारे बहुत ही डेडिकेटेड लीडर्स एंड प्राउड ब्रांड एम्बेसडर्स फाउंडर्स हमारे बीच मौजूद है। तो मैं आप सभी से हमारे जो गेस्ट है आज के इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। फर्स्ट हमारे इंजीनियर सुशांत विश्वास सर फ्रॉम बांग्लादेश से हमारे बीच मौजूद है। सर को हम वेलकम करते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच उपस्थित है शिखा विश्वास मैम। मैम को हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है मिस्टर नजरुल हक सर फ्रॉम बांग्लादेश। सर को हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है मिस्टर माशिदुर रहमान सर फ्रॉम बांग्लादेश। सर को हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर हम शुरू करते हैं और आज का सेशन मतलब मल्टीपल लैंग्वेज पर होने वाला है क्योंकि हम इंडियंस ज्यादातर मतलब हिंदी को समझते हैं और बांग्लादेश में ज्यादातर बंगाली लैंग्वेज यूज किया जाता है और अदर्स कंट्रीज पर इंग्लिश। तो आज मल्टीपल लैंग्वेज को हम यहाँ पर सुनेंगे और सीखेंगे भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल প্রথমে আমি আমাদের সম্মুখে এমন একজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছি যিনি বাংলাদেশের একজন বড় মাপের অন প্যাসিভিয়ান্স লিডার এবং একজন প্রাউড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস স্যারকে। স্যার আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম। আপনি আসুন এবং আপনার প্রথমত পরিচয় তুলে ধরুন এবং তার সাথে আপনার শৈশব থেকে অন প্যাসিভে আসা পর্যন্ত আপনার যে একটা ছোট্ট গল্প এটা আপনি খুবই ছোট্ট রূপে তুলে ধরবেন কারণ টাইমের সংকীর্ণতার কারণে। তো আসুন স্যার এবং আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত যে গল্প জীবনের অন প্যাসিভে আসা পর্যন্ত সেটা আমাদের সামনে আপনি শেয়ার করুন। Oh, thank you, Mr. Rahan. Thank you so much. First of all, I should say all the founders are leaders, but all the leaders are not founders. So thank you. All the founders are really leader. So hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, whatever it is. It's a great on-passive day for all of us. I'm Engineer Sushanta Biswas. I'm your friend and I love all of you. So greetings from my side to all the, I should say, the leaders. And indeed, it's a great pleasure to be here. I must thank to Rekha Makan, Soti Goel, Rahan, and also Nilamji. Thank you so much for inviting me to this, I should say it's a prestigious platform and it's so nice name, Priceless Moments. Yes, it cannot be value with any amount, so it's really priceless. But the question Mr. Rahan asked, it's a long chapter actually, but it's quite tough to make it short, but I'm just mentioning the highlights of my life. Hope that will make sense. So you have already heard that my name is Sushanto Biswas from belong in Bangladesh. Actually, I born and brought up in a native village. It's a small village, and so far I have been heard that I was very naughty. I was very naughty at my childhood, though I don't know
how much naughty I was, but sometimes my parents had to hear some bad words or comments due to my naughtiness. So it's not my fault, I think. It was the fault of my age. So whatever it is, that was my start. Actually, my parents were not so rich. They were very poor. And I have come that poor family, but they are very caring and loving to us. They hadn't enough education, but they are very much keen interested to make their children educated. So we hadn't enough financial support yet, especially my mom. She has tried her best to make us educated as much as possible. Sometimes she had to do some home-based business to maintain our education expenses. My father also supported so much, especially for our education. So starting from there, we have passed very hard time, and finally I passed my school and college with a first class or first division mark. That was a great achievement, I should say, for a person coming from that kind of poor family. So today, actually, my parents are not on this earth. They are no more. And it's a very sad history in my life. They were killed by some miscreants. That's another story. But I should say, I would pray to Almighty so that no son, no child saw this kind of killing, that is, parents are killed together. It's a, I should say, it's a great sorrow for any children, any child. So I pray to Almighty so that nobody can see that kind of, nobody can face that kind of situation. So finally, I accomplished my engineering in Triple E. Triple E means electrical and electronic engineering. And also I did my MBA after 25 years of passing my engineering. So that was my just, I should say, the educational background. Also, I did so many diplomas on different subjects, especially on now I am doing so many diplomas, so many short courses on digital marketing and trying to be a good digital marketer. Let's see what happens. And also I did my MBA on marketing. So it's another support. But you know that I didn't do any job actually. I never ran behind any job. Almost from my starting, just after passing my engineering, a few years, 2 or 3 years, I did my private job. And thereafter, I started my own business. And in my business career and the corporate career, I had several chances to have training in different countries, in USA, Europe, of course in India. So I have visited Switzerland, Sweden, Denmark, France, of course UK, USA, India, of course. India is like my home country, because almost half of the year I live in India, and I also have a business in India. So now this is the short background starting from my childhood. But now if I come to on-passive, in 2020, someone once upon a suddenly, someone proposed me regarding on-passive, but I hadn't any idea about on-passive, but I just wrote a letter to the support of on-passive, whether Bangladeshi citizens
are eligible for this on-passive platform or not? And I got positive reply, yes, Bangladeshi peoples are also eligible. So without thinking anything else, I just joined OnePassive. And before joining, I also attended one or two webinars that was conducted from Kolkata, India. And on that time, actually, there wasn't any webinar in our country. So I am grateful that guy, Mr. Ashok Das, I attended his webinar and I got some messages that OnePassive is not a MLM company. There no need to sell anything, no need any recruitment. So it will work on humanity. And there is no discrimination for any religion, color, race, even education. So that attracted me so much. So before attending that webinar, actually, I joined already OnePassive. So I am grateful to my villager also for giving me or offering me this chance. And starting from my joining, actually, I am enjoying the different processes of OnePassive, especially the surprises we saw from our CEO, Ash Mufade. Once upon a day or suddenly we are seeing that he is giving some cards or scooty iPhones to the employees for their good performance. It's attracted me so much. From those surprises, I think that rest of our life will full of surprises. And from the beginning of my joining, actually, I am going through lots of surprises, and those I'm enjoying actually. Though I have a formal joining in 2020, that is October 2020, but I have some more ideas of early 2020, that is January, March, April, May, June, like that. But I mainly focused on the main ID that I joined on 5th October 2020. The CEO of this company, and I appreciate him, that whenever I heard him first time, I got astonished that how photogenic face and brain he is carrying, that whenever we see him, actually we feel very peace in our mind, and we really feel very good in our heart also. And he is such a capable person, highly educated, no doubt about that, well experienced, so polite. So we are really grateful to that man having as a leader of OnePassive. And the different options, the different scope in OnePassive, out of those I should say the term CATMO, that explains everything. Actually, in my 30 plus years business career, I hadn't seen any company that gives incremental salary in each month to their employees. But I saw in OnePassive that all the employees are getting their salary, something, whatever the amount, they are getting some increment in every month. Can you imagine? The company hasn't yet started earning. Before earning, the company is giving so much rewards to its employees. So it's a great opportunity for the employees as well as for the founders too, for being with the platform, divine platform, I should say. And in my experience, I haven't seen any CEO like a giant company of OnePassive that comes so frequently, almost in every week,
and talk so friendly and nicely with the general people like us. So we are really, really thankful and grateful to Mr. Ash Mufare. And I think he's the best gift of Almighty God for all the people across the globe to uplift humanity. So this must, regarding your first question, I'll expect and I'll try to my best answer for the next one. Thank you. Over to Mr. Rahan. थैंक यू वेरी मच सुशांत सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अपना मतलब चाइल्डहुड से लेकर आप कैसे ऑन पैसिवियंस बने और बीइंग ए प्राउड ब्रांड एम्बेसडर आपका जर्नी कैसा था, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है सर। और मैंने आपके चाइल्डहुड से एक ही पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा, वो था कि चाइल्डहुड में आप मतलब अपने माँ-बाप से बहुत ही मतलब पिटाई खाई थी या फिर ऐसा कुछ। तो ये आपने बताया कि ये आपकी गलती नहीं है, आपकी एज की। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये हर एक बच्चे के साथ होता है चाइल्डहुड पर कि हम मतलब गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ करने की हमारी उम्र होता है और उस टाइम तो बच्चे गलती करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग मोमेंट्स था। और आपने जो कैटमो के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैटमो एक ऐसी मतलब प्रोजेक्ट है ऑन पैसिव का या फिर टर्म्स है जिसको मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगा है। और आपका जो इंजीनियरिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेसेस का जो नॉलेज है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं आपकी सेशन देखता भी हूँ। आपका बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका जो जर्नी है ऑन पैसिव से पहले और ऑन पैसिव के बाद आपने बताया। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। নেক্সট আগে বাড়তে আমরা এখন আমাদের সম্মুখে এখন আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছি আমাদের আজকের দ্বিতীয় অতিথি আমাদের শিখা বিশ্বাস ম্যামকে। ম্যাম, আপনাকে স্বাগতম। আপনি মঞ্চে আসুন এবং আপনারও আ আ ছোটবেলার থেকে শুরু করে আপনার অন প্যাসিভ এ আসা পর্যন্ত আপনার যে মতলব মানে একটা আ জার্নি, একটা যে একটা যাত্রা রয়েছে, সেটা সম্পর্কে আপনি আমাদের সামনে কিছু বলুন। স্বাগতম শিখা ম্যাম। শিক্ষা বিশ্বাস। নমস্কার। হ্যাঁ, শিখা ম্যাম আপনি স্যার শোনা যায়? হ্যাঁ ম্যাম, পরিষ্কার শোনা যায়। আপনি বলুন। নমস্কার। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শিখা বিশ্বাস দীপা, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে। আজকের ওয়েবিনারে আসলে একটা মনোমুগ্ধকর একটা ওয়েবিনার। সেখানে আমি যে উপস্থিত থেকে সবার সামনে এভাবে মানে কথা বলার সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আর অনপ্যাসিভের জার্নিটা স্যার আসলে কি বলবো, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো একটা জিনিস আমরা পেয়েছি, বিশেষ করে নারীরা। আর এখানে নারীদের যেভাবে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, এর জন্য মহামানব অ্যাশ মোফারে স্যারকে স্যালুট। আর আমাদের এইভাবে তুলে আনার জন্য আরো ধন্যবাদ যারা এইভাবে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের আসলে ধন্যবাদ জানালেও হয়তো কম হয়ে যাবে। হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাম, আপনি বলুন। আসলে ছোটবেলা থেকে আমি খুব আদরে আমার বড় দাদা এবং বাবা মা, পরে যদি কেউ থাকে সে আছে আমার বড় দাদা, সে আছে ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস। কারণ আমি তার কাছে একটা মানে মণিমুক্ত কি উপহারের মতো তার কাছে ছিলাম। আর আমি কোনোদিন কিছু বুঝতে পারিনি, সবকিছু তার কাছে আমি অনেক প্রিয়, সেই থেকে আসি। আর এখনো পর্যন্ত আমি মনে করি আমার বাবা মা নাই, তা আমি এখনো বুঝতে পারি না যে আমার কিছু মানে বাবা মা নাই। তা ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব যে আমার এরকম একজন মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না যে সে এখনো, আমি একটা সাংসারিক আমার সবকিছু হয়ে গেছে তারপরও যে এতটা আমার দিকে
তার সবকিছুতে আমার এতটা খেয়াল রাখা, এত কাজের মাঝে আমি এজন্য ঈশ্বরের কাছে তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি। আর অনপ্যাসিভে আসার একমাত্র কারণ ছিল আমার দাদা, যাকে বলবো যে সে আমাকে না বললে হয়তো আমি এই নিউজটা কখনোই পেতাম না বা আমি জানতাম না, কারণ আমি অনলাইন সম্পর্কে আমি একটু কমই ছিলাম এই জগতে। আমি আমার নিজস্ব একটা উদ্যোক্তায় আমি একটা বুটিক্স নিয়ে কাজ করি, সংসার সবকিছুর পাশাপাশি আমি চলছি ঘরোয়াভাবে। তার মাঝখানে যে এরকম একটা সময় আমি অনপ্যাসিভে সঙ্গী হতে পেরে আসলে আমি খুব গর্বিত। আর এই সুযোগটা করে দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্বাস স্যার। তা এখানে আমি আসতে পেরে আসলে অনেক আনন্দিত এবং অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা আনন্দ নিয়ে, আর তারপরে এখানে যে গুণীজনদের সান্নিধ্যে আমি আসতে পেরেছি এবং তাদের কথাগুলো যখন শুনি তখন সবকিছু ফেলে মনে হয় যেন আমি আসলে অনেক বড় একটা জায়গায় স্থান করে নিতে পেরেছি। এটা আসলে অনেক বড় পাওয়া। আর আপনাদের মতো এরকম জনদের সাথে আমি আসতে পেরে আরো আমি খুশি যে আমি আসলে এই প্ল্যাটফর্মে না আসলে হয়তো আপনাদের এরকম রেখা ম্যাম জি, তারপরে সাথী ম্যাম জি, নীলেন জি, রেহান স্যার, আমার এ পাশে মাসুদুর রহমান স্যার, আর আমার বড় ভাই এই যে নজরুল হক স্যার, আমি আসলে এনাদের পেয়ে আমি অনেক খুশি। যেমন অনপেসিভকে পেয়ে খুশি, তেমনি আপনাদের মতো এরকম ম্যাম স্যারদের পেয়ে আমি অনেক বড় খুশি। আমি মনে করি যে একটা পরিবারে কোনো কিছুর বর্ণ ধর্ম কিছুই নাই, সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নিঃস্বার্থভাবে সবাই আমরা কিভাবে একে অপরের পাশে আছি, এটা অনেক বড় পাওয়া। এটা হয়তো একটা পরিবারও এরকম হয়তো চাওয়া পাওয়া কম বেশি থাকে, কিন্তু আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আছি যেখানে কোনো ভেদাভেদ নাই। সবাই সবাইকে আমরা এতটা আপন, আমাদের মনেই হয় না যে আমরা কেউ দূরে আছি, কেউ, সবাই সবসময় মনে হয় যেন আমরা পাশে আছি। তো খুবই ভালো লাগছে। আর এই জন্য যে আমি সবকিছু কাজ করেও যে মিটিং গুলো অ্যাটেন্ড করি আমার আসলে খুবই ভালো লাগে। এবং আমি সময়টা যে কিভাবে চলে হয়ে যায়, মানে মিটিংটা একটা দিন না শুনলে মনে হয় যেন আজকে আমি কিছু মিস করলাম। তা এখানে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যে এখানে কোনো অন্য কোনো রিয়েল কোম্পানি সম্পর্কে যে রিয়েল কথাবার্তা সেগুলোই বলা হয়। এই জন্য খুবই ভালো লাগে যে এখানে কোনো ফেক কোনো কথা নেই। আর আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে আছি যে সেখানে কোনো ভুল ত্রুটি বা খারাপ কিছু নাই। আমরা এটাই অনেক বড় প্রাউড ফিল করি যে আমরা একটা রিয়েল জায়গায় আছি, রিয়েল সিওর সাথে আছি, রিয়েল প্রোডাক্টের সাথে আছি। এটা খুবই একটা বড় পাওয়া। এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং অ্যাশ স্যারকে ধন্যবাদ, অনপ্যাসিভকে ধন্যবাদ। এবং আমি এরকম একটা কোম্পানির ফাউন্ডারশিপ নিতে পেরে আসলে আমি খুবই আনন্দিত। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার, নমস্কার। অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে আমাদের সাথে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় স্পেন্ড করার জন্য, এবং আপনার যে ছোটবেলার আপনি বর্ণনা দিয়েছেন এবং আপনাকে আসলে কে আমাদের এই অনপ্যাসিভ পরিবারে শামিল করিয়েছেন এই সম্পর্কে আপনি যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। साथियों आज बताऊं हमारे मैम के बारे में, तो मैम ने हमें सभी को बहुत-बहुत मतलब थैंक्स कहा है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही खुश है ऑन पैसिव में आने के बाद। और उनकी जो जर्नी है चाइल्डहुड से लेकर, उन्होंने उनकी जो बड़े भैया जैसे हमारे बीच सर मौजूद है इंजीनियर सुशांत विश्वास सर, उनको बहुत ही मतलब धन्यवाद कहा है, क्योंकि उन्होंने उनको छोटे से मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि चाँद मतलब लाके हथेली पर रख देना, ऐसे मतलब उनको बड़ा किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका देखभाल किया है। और आज अगर वो ऑन पैसिव में है तो एकमात्र हमारे सर की वजह से वो ऑन पैसिव पर है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और अपने ब्लेसर को उन्होंने बहुत ही मतलब धन्यवाद कहा है, और उनके लिए वो हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, और वो एक हाउसवाइफ है। उनका एक
बोटिक्स का मतलब बिजनेस है उसको भी वो मतलब रन करते हैं और उनके साथ-साथ हर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। अगर कोई भी मीटिंग छूट जाती है उनसे तो वो बहुत ही अफ़सोस फ़ील करता है और हर एक वेबिनार को अटेंड करना उनके लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात होती है। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे साथ इतने अच्छे टाइम एंड वैल्यूएबल आपकी शेयर करने के लिए। আ এখন আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি এবং আমাদের সামনে আরো একজন আমাদের অন প্যাসিভিয়ান্স লিডার অ্যান্ড আ আমাদের প্রাউড ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের সাথে নজরুল হক স্যার উপস্থিত আছেন। আ আ স্যার আপনাকে স্বাগতম। আপনি আ আসুন আমাদের সামনে এবং আপনারও ছোটবেলার কিছু আ বর্ণনা দিন এবং আপনি কিভাবে অন প্যাসিভ এ আসলেন? কে আপনাকে অন প্যাসিভ এ নিয়ে এসে আপনি সে সম্পর্কে আমাদের সামনে কিছু আ কথা রাখুন। ওয়েলকাম স্যার। Thank you, thank you, dear Rahan Shorkar, for inviting me. My special heartfelt gratitude to our beloved sister Rekha Makhan, Nilamji Shatikwel, and as well as my great friend Engineer Shushanto Mashudur Rahman, and those who are present in this webinar. My heartfelt gratitude from our global dedicated on PCBans, as well as our Bangladeshi founders. It's a great pleasure for me to be here with you. I am very much honored for inviting me in this prestigious webinar, which Engineer Shanto said, really, it is a very good prestigious webinar. I have heard you in your YouTube channel. I am very much lucky for a participant on this webinar. My name is Gazi Nozul Haq. I am from Brahmanbaria, Bangladesh. It is the eastern part of Bangladesh. My nickname is Shopon. I am a ex-government officer as well as, but my childhood as like as Engineer Shushanto, because we are almost same age. He's 3 to 4 years senior to me, but I am also from a poor family, not poor, but my father was a teacher. He was not a rich man, but then the condition after liberation, almost our subcontinent, all of the villages are almost same, like India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, same. I am also from a remote area of Bangladesh. After 1971, I have born, as I mentioned. After graduation, I have joined a government service, and I am the elder son of my father. We are almost 3 brothers and 2 sisters. After graduation, I have joined in UNDP Bangladesh, and I worked 3 years, and almost I have completed my diploma first as a government officer in India, Bangalore, a renowned organization, my Resettlement Development Authority. My diploma subject was Vision Institutional and Visional Building, our main goal on basic. That I have, when I complete my master's, then I joined in government of Bangladesh. And last couple of years ago, I have resigned my job as a regional director. Financial or time freedom in government job, as well as we are honored, but there is no financial and time freedom, and we have to maintain a lot of rules and regulation. That was very bothered for me. From childhood, I am also a boy, like tough administration, because my father was a teacher. He very much tough administration and bite me so much several times. But although I was a good student in my area, and my father's dream was my elder son will be an officer, and I think I fulfilled his dream. He is no more in this world, but my mother is alive.
He's at most illiterate. Although my father was literate, but mother was illiterate. I am very much lucky as a son of teacher, but at present I am very much lucky as a founder. Last 2020, December 2020, I took my foundership. My blesser was a topmost high-level government official of Bangladesh, Mr. Asaduzzaman. Salute, sir. You give me such type of opportunity. Today, I am fully engaged in on-passive. Engineer Sushanta and me are jointly covered a meeting weekly and international meeting in every Friday and others 2-day national meeting. We want to deliver our Bangladesh, our own Pacifians, as well as our subcontinent condition to the European and African and American Grand Ambassador, as well as our leaders. Maximum times, every week, they visit with us and they know our socio-economic and cultural condition. That is our dream. We are work tirelessly in this era. So far I know there is after India, we are the second largest maybe founder among the world. So we should celebrate it. And I am very much honored to be a founder. And today I am a full-time on-passivians. There is no doubt about it. It is a real company, legal company. And as an ex-government officer, I know it very well. There is no fraudulent activities in this company. I have judged it several times, 3 to 4 years, because last 3 to 4 years I have working in the online sector like blockchain technology. I have seen a lot of fraudulent activities in this sector, but in on-passive, Mr. Ash and his tech team and all of our founders, totally real. There is no few activities in fraudulent. So we are very much lucky being an on-passive, especially our subcontinent people, because almost at least above half of the founders are in India, Bangladesh. So after a 1 or 2 years, our socio-economic, our religious, our educational institution, and our social pattern will be changed through our on-passivians. It will be great achievement for us, not only our personal life, our social life, our country's economy, and our next generation to generation socioeconomic condition. So I am very much lucky. That was my first intro, Mr. Raihan Sorgar. Thank you for inviting me. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ নজরুল হক স্যার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় স্পেন্ড করার জন্য, এবং আপনার মানে একটা ছোটবেলার চাইল্ডহুড থেকে নিয়ে অন প্যাসিভে আসা পর্যন্ত আপনার সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা দেওয়ার জন্য। আপনার যে জার্নির ব্যাপারে আপনি এখানে বর্ণনা দিয়েছেন, খুবই ভালো লেগেছে আমাদের শুনে। साथियों हमारे नजरुल हक सर बहुत ही प्राउड फील करते हैं ऑन पैसिवियंस होने के नाते, और इनका भी चाइल्डहुड जो है वो उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर सुशांत विश्वास सर की तरह ही है, और बहुत ही खुद को प्राउड फील करते, और मतलब इनका भी मतलब एक मतलब एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पर। ये अभी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पर काम भी कर चुके हैं, और इन्होंने बताया कि ऑन पैसिव में आने के बाद वो मतलब अभी फुल ऑफ टाइम, यानी पार्ट टाइम नहीं, फुल ऑफ टाइम ऑन पैसिव को स्पेंड कर रहे हैं, और ऑन पैसिव के ऊपर पूरा भरोसा है। और इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर पर काम करते वक्त देखा है कि बहुत सारी कंपनी आता है जाता है और लोगों को फ्रॉड स्कैम करके जाता है, लेकिन इन्होंने ऑन पैसिव को समझा है बहुत ही डीपली। एंड इन्होंने बताया कि ऑन पैसिव से
मतलब ऐसा कोई भी मतलब किसी को नहीं होगा कि ऑन पैसिव मतलब स्कैम करेगा या फिर मतलब भागने का कोई संभावना। तो ये बहुत ही अच्छा लगा सर, और मेरी तरफ से मैं सभी पार्टिसिपेंट, सभी हमारे लाइव अटेंडीज को बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर हम एक सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म पर है, और हमारे बांग्लादेश से गेस्ट नज़रुल सर की बातों पर आपने अगर ध्यान किया होगा तो उन्होंने साफ कहा है कि मतलब ऑन पैसिव एक लीगल एंड জেনুইন কোম্পানি है, আইটি কোম্পানি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। চলুন আমরা এবার সামনের দিকে এগোই এবং আমাদের আজকের আরেকজন অনন্য অতিথি আমাদের মাসিদুর রহমান স্যারকে আমরা ওয়েলকাম জানাবো, স্বাগতম জানাবো। স্যার আপনি আসুন এবং আপনিও আপনার ছোটবেলা থেকে শুরু করে অন প্যাসিভ আসা পর্যন্ত আপনার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় স্পেন্ড করেছেন সেটা সম্পর্কে আমাদের সাথে কিছু শেয়ারিং করুন। Assalamu alaikum and very good evening, all respected, proud, and lucky founders in this webinar. And also, I would like to welcome all the viewers who are watching YouTube channel. I do like to welcome all of you. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ बहुत ही अच्छा वक्त बिताने पर। तो मेरा चाइल्डहुड जो है, आई एम फॉर्चुनेट, मेरा बहुत ही सौभाग्य यह है कि मेरा पिता और माता दोनों ही जीवित है। उन दोनों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। हम 3 भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है। मेरा कोई बहन नहीं है, तीनों भाई है। मेरा पिताजी का, मैं सबसे छोटा है, बहुत ही लाडला, बहुत ही प्यार मिला मुझे। तो मेरा पिताजी जब 2 बेटा का बाप बन गया था तो उसका लड़की के लिए बहुत ही ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि एक लड़की हो, तो इसलिए उन्होंने कोशिश किया है। लेकिन मेरा जन्माने के वक्त मेरा चेहरा बहुत ही अच्छा था, तो सबने सोचा कि ये लड़की होगा। लेकिन ये एक अच्छा खेला, बॉल चला गया माठ के बाहर एंड मैं आ गया एज ए लड़का। तो ये है मेरा जन्म कि ये मुझे बहुत ही सुन के बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा पिता ने चाहा कि एक लड़की हो, लेकिन मैं आ गया। तो मैं इतना खूबसूरत था इन माय चाइल्डहुड, सबने मुझे बहुत ही प्यार दिया। तो इन प्यार के साथ मेरा लाइफ शुरू हुआ है। My father was a professor in chemistry. He was principal from a government college and he retired from a government college. So छोटा से मुझे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। मुझे दुख किया है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, ऐसे चल रहा था। मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेकर राजशाही यूनिवर्सिटी बांग्लादेश से मैंने पास किया है, और इट्स माय प्लेजर दैट आई वुड गेट फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन at that time. So I am very proud of that. But professionally, I am Mohammad Masudur Rahman. I am a banker. So in my banking career, I was leading a very good career. But 2017 साल 2017, it was my life's most strategic time. 2017 से मैंने बैंकर से बेघर बन गया। एक घर से मैं एक बैंकर हूँ और एक तरफ से मैं एक बेघर हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा जब 10 साल की था उस वक्त suddenly he was very brilliant student. My son, he was very brilliant student. He was first boy in the class. At the time he was in class 4. 2017 में मेरा बेटा का सडनली लीवर फेल हो गया था, और लीवर फेल होने के बाद उसका ब्रेन की कोलैप्स हो गया था, वो पैरालाइज्ड हो गया था। इसीलिए मैं उस वक्त से बैंकर से बेघर हूँ। एक इधर से मैं बैंकिंग सर्विस निभाता हूँ, अलग से मैं बेगिंग करता हूँ, इसलिए कि मेरा बेटा का ट्रीटमेंट मिले।
तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जो मुझे दिल का सुकून मिले, जो प्लेटफॉर्म मुझे दिल का सुकून दे सकता है, जो प्लेटफॉर्म मुझे एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है, जो मैंने मेरा 20 साल के करियर में नहीं पाया वो दे सकता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते 7 दिसंबर, विच मैं कहता हूं कि लाकी डे, लाकी 7 दिसंबर 2020 में मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया। मेरा एक बैंकिंग कॉलीग मुझे कहा कि सर एक प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैंने सोचा आईटी प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड। मैंने फाउंडर बन गया और फाउंडर बनने के बाद वो कॉलीग ने मुझे कहा कि सर आपका बेटा तो बीमार है, आप तो इंडिया जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं हैदराबाद जाते हैं। तो मैंने सुना है कि हैदराबाद में एआईजी हॉस्पिटल है जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल। इसीलिए मैंने 14 अप्रैल 2021 में मैं हैदराबाद गया था और ये मुझे मौका मिला कि हमारे आईटी हेड ऑफिस हैदराबाद जाने के, और वहां जाने के बाद मैंने 2 वीडियो पोस्ट किया था हमारी बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए। ये जो 2 वीडियो बांग्लादेशी कम्युनिटी को इतना इम्प्रेशन, इतना मोटिवेशन दिया है कि बांग्लादेश में आज 1 लाख की ज्यादा फाउंडर हो गया। ये मेरा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो उस वक्त से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ और सब क्रेडिट गोस टू आवर माय ऑनरेबल फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड इंजीनियर सुशांत विश्वास एंड आल्सो नजरुल हक। बोथ फ्रेंड मुझे इतना वक्त देता है, इतना मुझे सपोर्ट करता है कि मुझे कभी नहीं महसूस होता है कि मैं एक दुखी पिता हूँ, मेरी बेटा इन किसी वक्त भी वो इस दुनिया से जा सकते हैं, ये कभी मुझे महसूस नहीं होता। मुझे ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे स्वर्ग जैसा सुख दे रहा है। इसीलिए आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। मैं दिल से ऑन पैसिव जर्नी को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही अच्छा से महसूस करता हूँ और गुजारता हूँ। ये है मेरा चाइल्डहुड से लेकर ऑन पैसिव जर्नी। Thank you so much for inviting me here. Thank you. I got emotional. रेहान सर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया. These kind of moments break you, and but when you have a very good friend like engineer Shushanta, you are blessed with 2 things. One is the friend and one is on passive, and both are family. On passive is the biggest family on earth, and I know we cannot get that time back for you, but we can really pray everyone. I really want everyone to flourish. I mean, to give the blessings that we all can. 14 lakh people across the world, those who are listening to us, let's have blessing for your child, and may God just take away all his pain and bless him with the health and whatever we can ask for. I would really want Mr. Engineer Shushanta to have some words. Actually, we know his pain quite from a long time, but actually we hadn't any word to make him satisfied. But still, we are trying our best to give our best support, best suggestions, and also we are trying to treat his kids in a better way, better souls, and most of all,
we are actually, we are telling in front of him, we are trying to make his mental strength upwards so that he can remain mentally strong. But there is nothing bigger than the prayer. We all the founders are really praying for his child. Actually, his both son and daughter are sick, but daughter is in better condition. She is out of danger. But as a father, how painful it is, it cannot be described. Yet we pray to Almighty for the betterment of his child, that is our child. Hope by any miracle he will be with us quite for a long time. Thank you, Rekhaji. Thank you so much. We all would pray, and every this moment is something that cannot be described in words, truly, because a father can only understand the pain of the child, or the mother can understand the pain of the child. The rest of us can just feel that pain of the father, but we cannot go beyond the feeling that they are going through. But yes, we have all the hopes. In future many things would happen, maybe a great miracle happens, and God will bless your child. That's what we can all pray. And yes, you too, I've seen the kind of bonding on passive have given as a friends. I don't think it's more than 1 or 2 years that you have become friends, right? I believe that. It's almost lifetime. Yeah, now it's always almost lifetime, forever, but it may be only 2 years at the moment, right, when you may have become friends. But we are not feeling so that we are friends for last 2 years. We are Yeah, friends quite for a long time. What for a long time? Yes, this is that's called nature. Yes. mental connection. This is called mental connection. So just cherish this moment, yeah, this friendship. Thank God we all are blessed with the on passive, where we actually are. These moments are priceless. You cannot buy or purchase it anywhere from any market. You would not get it. So these moments and the friendships that we have got in on passive business, it's not only the business, it's the heart to the world. Thank you so much. Over to you, Rehanji. थैंक यू वेरी मच मास्टर रहमान सर, आपकी जो आज का शेयरिंग एंड फीलिंग्स था, मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया था कुछ देर के लिए। और आपने जब पहले शुरू किया था आपकी जर्नी के बारे में कि मुझे मतलब लड़की जैसा लगता था, बहुत ही खूबसूरत था मैं देखने के लिए। सभी आशा करते थे कि मैं लड़की हो जाऊँ। तो ये जो फीलिंग्स था ये मतलब आपका जब बैंकिंग सेक्टर से आपने बताया कि आप बेघर हो गए, मतलब आपकी जो मतलब बेटा है उसका जो अभी मतलब करंट सिचुएशन है, एक पेशेंट्स है, पैलेस हो गया है। तो मतलब ये ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट्स है कि एक मतलब फादर्स के लिए वो सबसे बड़ा दुःख की बात है कि उनके बच्चे मतलब उनके आगे कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हादसा उनके साथ हो जाए। तो हम सभी प्रे करते हैं आपकी बेटे के लिए, सभी दुआ करते हैं कि वो मतलब ठीक हो जाए। और गॉड से ये प्रे करेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब जो होने वाला था वो ना हो। तो हम ज़रूर इसके लिए दुआ करेंगे। और आज आपका जो मतलब अभी जो डेडिकेशन देख पा रहे हैं हम, हर एक फाउंडर के अंदर वो डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि हर एक फाउंडर आज सिर्फ़ खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए सोचता है, लेकिन आपका डेडिकेशन सबको यहाँ पर मतलब हार मनाता है, क्योंकि आपने सब बाधाएँ, सभी जो आपके सामने हार्ड सिचुएशन है, इसको पेल कर आपने वो करके दिखाया कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्या हुआ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और इसको लेकर आप आज हमारे सामने और हर एक वेबिनार को अटेंड करते हैं। आपका डेडिकेशन को हम सलाम करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। एंड सेशन को हम अगर टाइम है तो कंटिन्यू कर सकते हैं मैम? हाँ जी, क्वेश्चन सकते हैं। यस। मेरे तो को हम एक क्वेश्चंस करना है। यस, थैंक यू वेरी मेरे मच को मैम। एंड
हम आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे चीफ गेस्ट इंजीनियर सुशांत सर को करने वाले हम कि सर आपकी मतलब আপনার ছোটবেলায় বা আ বন্ধুত্বের জীবনে আপনার জীবনে অনেক বন্ধু থাকতে পারে। এই সমস্ত বন্ধুদের সাথে আপনার এমন কি কিছু সময় কেটেছে যে সময় আপনি আপনার বন্ধুদের প্রতি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গেছেন, রাগারাগি করেছেন এবং ওই সময়টার আপনার আ মাত মানে ফিলিংস টা অনুভবটা কেমন ছিল? এবং আপনি সেই সময়টাকে কিভাবে কাটিয়ে তুলেছিলেন? এই সম্পর্কে আমাদের সাথে একটু শেয়ারিং করুন স্যার। It's a very tough question. Yet, thank you so much, Rehan. You know, the bondage of friendship already it has been expressed here that how bondage actually made between the friendships. For the real friendship, there are several types of friendships, but for the real, there are four kinds of friendship actually, and these are called just only friend, then acquaintance, just you know someone, he may be your friend, some is good friend, some is just close friend, someone is best friend. So many definitions are there. But if you have a real friend, that is called a friend is need is a friend indeed. That is, friend means he will always beside you at your bad time and also at your good time. That is, all the time, friend will support you. That is actually called the relationship between two or more persons. That's the association, and those are concerned to each other. That's actually friendship, but it's a good side. Of course, sometimes there are some misunderstanding, some miscommunications, even quarrel between friends. But it's a very natural thing because we are human being. We may have some misunderstanding on any subject or any matter, but it can be managed very easily if both the friends are matured. And if both are real friends to each other, because different kinds of friends, I said. So if they are really best friend or the close friend to each other, it's very easy to manage. Definitely, we had some misunderstanding and some different feelings, different understandings for any particular cases, but we have managed very nicely. And to manage any misunderstanding between friends, the first thing I should say, be calm. Be calm. Don't be excited. Give a pause. Take a time. Please try to understand, try to listen both their opinion. Where is the problem? And try to find out the problem. And if you really respect to your friend, you must listen both. You should listen each other. And definitely, if we can express our thought, our feelings on the particular issue, I'm sure that will be resolved. That will not be a very big issue actually. But we have to be respectful to each other, and we should not be, but we should take time. Don't try to make everything very quick, and we should not take any third person to interfering between our misunderstanding. And very important thing is we should not blame to each other. We should not blame or accuse to each other, and both should try to understand the issues and accept the perspectives of each other. Because if we discuss the matter, then, and if we are really friends to each other, we should understand where is the problem, where is the mistakes we are doing, and that can be resolved
with mutual understanding. Definitely, we had some misunderstanding with our friends, and we resolved those very nicely with several discussions and understanding with due respect to each other. So I hadn't any big issue that takes long time with that misunderstanding. Sometimes I can give an example that Masudur Rahman and Nazrul Haq, they're very close and best friend to me. But sometimes some issues raised, we can be the same decision. But on discussion, we mutually and amicably resolved those problems. So it's a natural thing, but you have to have the respect to each other and the bondage and the understanding, everything will be resolved. Thank you. Thank you so much. Over to Mr. Rahan. थैंक यू वेरी मच सुशांत सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए और बीइंग ए प्राउड एंड मतलब म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से हम एक फ्रेंडशिप को कैसे एक बेहतर फ्रेंडशिप बना सकते हैं और दोस्ती फ्रेंडशिप इसके अंदर मतलब लड़ाई झगड़ा म्यूचुअल डिस्कशन बहुत कुछ होता है, मतलब एन्जॉय होता है, फन होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसी के साथ हमें म्यूचुअल डिस्कशन करना चाहिए। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर और कुछ हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि हम मतलब बिछड़ भी जाते हैं, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए? ज़्यादातर म्यूचुअल डिस्कशन के माध्यम से जो भी हमारे अंदर मतलब ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा बिहेव हो रहा है, उसको हमें सुधार करना है और एक फ्रेंडशिप को हमेशा-हमेशा के लिए उसको हमें बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और रेहान सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यस मैम। Thank you, Sushant sir. I want to say a quote that is related to friendship. Sorry. So, one best book is equal to 100 friends, but one good friend is equals to a library. Yes. लाइब्रेरी कहते हैं ना कि एक लाइब्रेरी में हर चीज आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। फ्रेंड एक ऐसी जगह है। तो आज आपने इस प्लेटफॉर्म पर प्राइसलेस मोमेंट विद फैमिली में यहाँ पर अपने साथ फ्रेंड्स को यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ ये प्रूफ होता है कि ओनली ब्लड रिलेशन ही फैमिली नहीं होता, बिल्कुल भी। वो रिलेशन कोई सिर्फ दिल से जुड़ना चाहिए, वो रिलेशन बहुत आगे तक लाइफ टाइम तक जाते हैं। और मसूदूर सर, आपके लिए मतलब हम लोग प्रे करेंगे हमेशा। हमारी प्रे है जितने भी व्यूअर्स हैं, और कहते हैं कि गॉड के आगे प्रे करो, बहुत पावर होती है उसमें। और मुझे अपने गॉड पर बिल्कुल बिलीव है कि आपका बेटा हमारे साथ हमेशा हमारे साथ ऑन पैसिव एंजॉय करेगा, ये मेरा बिलीव कहता है। और उसी बिलीव के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पर उसके लिए प्रे भी जरूर करूंगी, और जितने भी यहाँ पर हैं। और प्रे में बहुत ताकत होती है, तो डोंट वरी, चीजें बदलती है, मिरेकल्स होते हैं। तो वो मिरेकल होने वाला है। बहुत चीजें हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि कभी हमारी लाइफ में ऑन पैसिव आएगा, कभी भी नहीं। कि हमारी कंपनी के सीईओ ऐश मुफर्रे सर ह्यूमैनिटी को लेकर आएंगे। सो वो लोग इतना बड़ा विजन लेकर आए, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। सो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, और जरूर होंगी, और हम सबकी प्रे काम आएगी। थैंक यू सो मच। और मैं भी ऐड करूंगी यहाँ पर कि a friend, as engineer Shishanta said, a friend in need is a friend indeed, and that's very true, because when you have good times, you are surrounded with people from every part, even if you don't know them. However, a true person and a true friend is that stands with you when you are actually in need of that that kind of relationship, and that somebody who is with you, sharing your shoulder. No matter a family with
at times family also wouldn't stand with you. But when the friend stands with you, or when any unknown person stands with you, when you are actually in need, that is the family. What I personally believe. That is the reason priceless moments with family not only means the family or a husband, wife, and children. It also means friends. And here in On Passive, we are blessed to have the biggest family on earth. The biggest family on earth who is praying for each other so that we can have this we in our life, which is victory, and spread love, happiness, and humanity. That's the vision. Wow. Thank you so much for showing this true friendship as being family together. Thank you. And over to you, Rehan. Mr. Rahanji, 30 seconds if you allow me. Yes, sir. Actually, as Rekhaji said, she's very truly said. Actually, the friends or the relation that is connection between two souls. If two souls connected perfectly, then relation is made. So in that case, who are those persons doesn't matter. Actually, I am blessed with 3 kids, and they are actually settled in US. And my wife is not in position to come on video. So yet we are enjoying a family show that is called Priceless Moments. Really, really, it's priceless. Thank you. Over to Mr. Rahan, please. थैंक यू वेरी मच सुशांत सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक के ऊपर फ्रेंडशिप के ऊपर आपने बताया, और थैंक्स टू स्वाति मैम एंड रेखा मैम, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते, और আমি এখন আমাদের নেক্সট আজকের অতিথি নজরুল হক স্যারকে ইনভাইট করতে চাই, ওয়েলকাম জানাতে চাই। স্যার আপনি আসুন এবং আপনিও মানে ওই বন্ধুত্বের সম্পর্কে কিছুটা ডেসক্রাইব করুন। সেখানে কিছু প্রকাশ দিন যে বন্ধুত্বের মধ্যে অনেক কিছুই হয়ে যায়। অনেক মারামারি, গন্ডগোল, ঝগড়া ইত্যাদি হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে একজন আসল বন্ধুত্ব কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় বা আপনার ওই অবস্থাতে একজন বন্ধু হিসেবে আপনার কি কর্তব্য হয় আরেকজন বন্ধুকে বোঝানোর, এ সম্পর্কে আপনিও আপনার অনুভব বলুন স্যার। Thank you, Ryan Shorkar. Oh my God, what a nice explanation about friendship. I think our engineer Sushanto, Shati Goel, Rekha Maken, they 3 all are philosopher about this friendship. I am nothing like that, but I have some points about on this issue. Engineer Sushanto rightly said, always he explained elaborately everything, but in a brief, I want to say, I think real friendship is the key to the healthy heart and mind. Friends to do so much to make our world a better place. It is possible for real friendship. On the other hand, I think friendship is always a sweet responsibilities, never an opportunity. Some people takes it opportunity, selfish people, but a real friend always take it as sweet responsibilities that will be more helpful for a friend. So the best way to navigate through our relationship is to be open and honest, and to share your emotion as your life partner, also friend, whatever it is. Always you have to honest in your faithfulness in your relationship, and always respect your counterpart and respect his or her emotion, and always be logical. If you be logical, then there will be nothing in friendship to disappointed. So I think everyone should be logical and respect each other emotion. That will be real friendship.
Thank you, Mr. Raihan Sorgar. Thank you, Rekha Magan and Shati Goel for your nice explanation. I I think really Mr. would Mashoor love Rahman, to. he is also a philosopher. Yeah. Before we pass on, I really want to know, how did you three became this? I mean, the friend for lifetime, coming in on passive. What made you become so good and close friends? Something clicked, right? Something happened, right? So the magic. We would really love to know that magic. I think Masood Rahman can start. Yes, thank you very much. Friendship, friend and ship, friend and ship. Whenever ship बहुत ही समंदर की गहराई से जाएगा, वहां उस शिप में हम लोग जब सवार होंगे, इसे निभाना है। ये जितना भी वेदर खराब क्यों ना हो, हम लोग इस फ्रेंडशिप को निभाएंगे। इसे कहते हैं विश्वास, और हमारे साथ है सुशांत विश्वास। सो वी आर फ्रेंड फॉर एवर, वेयर विश्वास इज हियर, so we are friend forever. And also Nuzulok, thank you very much, but I would like to say one thing: friendship is a lifetime journey, and ये जीवन का एक कहानी है। सो मैं एक गाना के साथ कहता हूं कि फ्रेंडशिप एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, वेबिनार करते करते बातें करते करते फ्रेंड हो गया, हम फ्रेंड हो गया, सारी जीवन के लिए फ्रेंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एंड जितना भी मतलब इमोशंस था वो पूरा मतलब खत्म हो गया, और मतलब हम वेरी एक्साइटेड हो गए आपकी दो गाने के माध्यम से, और फ्रेंडशिप को भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये दोनों गाने के माध्यम से आपने प्रकाश डाला है, और बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे Mr. नेक्स्ट जो Rahan, I'll take 30 seconds also, please. यस सर, एब्सोल्युटली। Actually, as Masood Rahman explained, there no need any more explanation. But I should say that Nazrul Haq and Masood Rahman, they are not my classmate or classmate. They are not friends from my childhood, but we are friends from through on-passive. So on-passive made us friends actually. But as Nazrul Haq mentioned, that if you are logical, ethical, and honest, these three things, and if we understand each other, definitely any two persons or more persons can be friends to each other. You see, in on-passive platform, we are speaking always in the same language. That is called on-passive language. Whatever the other language, Hindi, English, whatever it is, but we are always speaking, we are always talking the same thing, nothing else. So on-passive has made us friends forever. So not only this Nazrul Haq, Masood Rahman, we all are friends to each other. In generally, it is called on-passivian friends. Thank you. Over to Rahan, please. Thank you very much. Yeah, Rehan, we have Neelam as well. I want her to share her feelings as well as with friendship, because she also is, feeling and getting that kind of emotions from on-passive. We have become friends. Honestly, that's very true. Yes, Neelam yes. ji. नीलम मैम, प्लीज मैम आइए, और आप भी अपना फीलिंग्स शेयर कीजिए हम सबके साथ। ओके, एक्चुअली में रेहान सर, नीलम मैम के आज हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनके गेस्ट आए हुए हैं घर पे, तो उनका मैसेज आ गया था। यस,
So let's Yes. wish happy birthday and Happy Yeah, birthday. happy Happy birthday to because the we are husband friends of and family, so Yes, the bilkul. happiness is with the family. Happy birthday to your husband, and may God bless both of you with lots of love and happiness. केक काट लीजिए और हम लोग कुछ नहीं देंगे हम देखेंगे भी नहीं बिल्कुल। अभी मैसेज आ गया था मेरे पास। ओके। यस। So, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इस सेशन पर अभी नेक्स्ट हम हमारे चीफ गेस्ट इंजीनियर सुशांत सर को जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है এন্ড এটা সম্পূর্ণ একটা পৃথক কোয়েশ্চেন প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে স্যার আপনি মানে আপনার ছোটবেলায় আপনার ভাই বোন যারাই আপনার সাথে ছিল বা এখনো পর্যন্ত আছে তাদের সাথে আপনার ছোটবেলার মানে একটা আচরণ সম্পর্কটা ঠিক কেমন ছিল? এবং নেক্সট এটার সাথে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন বেঁধে দিতে চাই আপনার সাথে যেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ভাই-বোন বা বাবা-মায়ের স্বপ্নটাকে কতটুকু বাস্তব বলে মনে করেন? বা আপনি আ আপনার ভাই-বোন, বাবা-মায়ের স্বপ্নটা আপনার কতটা স্বপ্ন বলে মনে করেন এবং কতটা আপনি সেই স্বপ্নটা পূরণ করতেও পছন্দ করেন? Thank you, Mr. Raihan. Thank you so much. Actually, we were talking about the friendship that is also called relationship, and siblings that is by brothers and sisters. The relationship between them is also most important, and the siblings play a very unique role in on another lives. In my life, I'm elder among the brothers and sisters, and there is almost a very good age gap. So we had a very good relation, and almost they respect me always, and I was very good in studies, and they are too. But in all aspects, we had a very good relationship between our brothers and sisters. Of course, there must have some misunderstandings and quarrels, and it is quite natural. And that weren't our mistakes. That were the situation and our age demands so. So definitely we had that. Otherwise, we had very good relations to each other, and we all brothers and sisters knew that we are not rich enough. Our parents hasn't enough or sufficient resources that whatever we ask, they will fulfill. But they have tried their best. But their main focus was on our education. Because if I go back to my generation, they weren't educated. So my mother especially, she was so focused and so dedicated. Even she sometimes sacrificed her foods for their children so that they need foods, they will go to school. So many sacrifices she did in her life. So on this special day, I should pay my respect and my tribute to both of them. So we had a very good relation almost, except some natural happenings that must be there. We are not out of those. We went through all those natural occurrences. Now, if I go to dream of my parent, actually, at the beginning of my speech, I said that I and we, actually we means with the siblings, came from a poor family. So we knew the pain of poor. Especially my father was very much helpful to the poor people. Whenever, actually after passing my engineering, and definitely I had a very good earning, we had
very solvency in our family. So whatever the amount, whatever the fund I gave to my parents for their expenditure, regular expenditure, most of the times I saw that my father spent those money to buy book or for any good cause of any poor people. So he had a dream that to help to the poor. Actually, I am also belonging that dream. I like to help to the poor people, especially for their education, because I believe without education, a particular area or country or any nation can go up, can't grow up. So to make any particular area or any nation, education is must. But if you are poor, then they don't have enough uh, consciousness regarding their nutrition and also health. So if you are not healthy, you can't study well. So I have a dream to make an institute so that I can help to the poor people, not only for their education, but also for their nutrition and health too. And you will be happy that I have already made a foundation in the name of my parents. And I have already helped some poor people for their education. I have donated some computers to the schools where actually I studied. In 3 schools, I have donated almost 15 computers because it's so native, so village. There is not enough education material. So I have first time given the, even government has given computer and other IT gadgets to those schools. But before 10 years, I have given them from my own pocket, from my own initiative, and I made the computer lab in those schools where actually I studied also. So that was the dream of my parents, and I am also continuing their dreams and trying to fulfill their dreams, but still that dream is in the small shape. I'm sure by the grace of God and with this platform of One Passive, I would able to make a proper institute, and through that institute, I like to help to the poor people as well as I like to look after their nutrition and health so that they can grow up with a good health and they can have a good education. That was my parents' dream, and that is my dream too. I'm sure with the support of One Passive platform, I will have sufficient income. I don't need that because I'm doing my own business more than 30 years. My children are well established and they are living abroad and they're established in US. So I don't have enough demand to maintain my family expenditure. So I'm sure, and I have got multiple accounts, and through those accounts, I'm sure we'll have sufficient or lots of money that we don't need. As our CEO Ash Mufara said, that he needs only 10% of his earning to run his family. And I think it would be same for me. So I will donate 90% of my earning for those good causes, good purposes, or to our mother of the products, Obelisk. Thank you. Over to Rahan. Wow, 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 Engineer Shashanta. People only look forward for their own dreams, but you are pursuing and you are carry forwarding your parents' dream as well as your own dreams. I mean, you made their dreams as your dreams to fulfill them. And I'm sure they would be happy wherever they are, they would be happy because dreams of the parents, when it's been taken over by the children, it's a blessing from the parents as well as you get a lot
in returns. That's for sure, because it's a beautiful dream, and we all pray that this dream of yours come true. Thank you so much. Over Thank to you. you. थैंक यू वेरी मच इंजीनियर सुशांत विश्वास सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो मतलब ड्रीम्स है और पहला तो क्वेश्चन ये था कि आपकी जो भाई बहन या फिर फैमिली मेंबर्स है इनके साथ आपका जो एक रिलेशनशिप संपर्क है वो कैसा है, इसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया है कि एक माँ क्या करता है कभी-कभी मतलब बच्चों को खाना देने के लिए खुद भूखे रह जाते हैं और बच्चों को खाना खिलाता है। तो ये आपकी माँ के साथ भी हुआ था, इसको भी आपने बताया। तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स है। आज आपकी माँ-बाप दुनिया में नहीं है लेकिन आप इसको याद कर रहे हैं और उनकी जो सपना है, आपकी भाई-बहन या फिर माँ-बाप जिनका भी कुछ भी सपना था, उसको आपने मतलब रियल मतलब आज एक डेफिनिशन दिया है, एक डेस्टिनेशन दिया है कि आपने एक फाउंडेशन मतलब बनाया है जिसका ज़रिया है आपका माता-पिता। तो ये बहुत एक बड़ा सक्सेस है आपके लिए और आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। आपको मैं मेरी तरफ से कांग्रेट्स करना चाहता हूँ और आपके ड्रीम्स हर ड्रीम्स पूरा हो, ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, एक सेकंड के लिए, जस्ट 1 सेकंड, ओके. Engineer Sushanta, being eldest sister of my 2 younger sisters, I had to sacrifice at times, and I had that pillow fight, and that small fights, and the quarrel moment. Did you also share that? Actually, we don't have that kind of any such mentionable moment. So we almost pass a very nice and calm, peaceful time actually. So we hadn't any that kind of incident in our relationship. So we are really, really happy for that. Thank you, Rekha ji. थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। नेक्स्ट आगे बढ़তে और এখন আমরা আরেকজন অনন্য অতিথিকে ওয়েলকাম করতে যাচ্ছি এবং তার কাছেও একই প্রশ্ন নিয়ে যাব যে নজরুল হক স্যারের কাছে। স্যার আপনি আপনারও ভাই বোনদের সাথে আপনার ছোটবেলার সম্পর্ক, পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল? এবং আপনার ভাই-বোন, বাবা-মায়ের সম্পর্ক এবং তাদের যে একটা স্বপ্ন ছিল যেটা আজ পর্যন্ত পূরণ হয়নি বা তারা চেয়েছিল সেটা পূরণ হোক, সেই সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? এবং তাদের স্বপ্নগুলোকে পূরণ করা আপনি আপনার জন্য কতটা পছন্দনীয় মনে করেন? Thank you. Thank you, Raihan Sharkar. Thank you again. Almost Engineer Sushanto and my story almost same, because we have come from a remote area and not a rich family. But I have 2 sisters and 3 brothers. I am second elder brother, and I am very much lucky because I have an elder sister. In my childhood, when we quarrel, always I win because my elder sister always sacrificed for me. Who have no elder sister, he cannot believe what a tremendous childhood, tremendous moment is my present life. Always, she is very much caring for me. And I think all elder sisters are always caring to his junior or younger brother, especially brothers. They love very much. I am very much lucky. I have an elder sister and I have a small sister. In my childhood, I think my siblings sacrificed very much for me because already I have stated we are not a rich family. My father was a teacher and I was a good student, and I was their dream. At once, I will help them for their livelihood, their studies. My father was struggling to maintain the study cost because we are 5 sisters and brothers. Finally, after got my service, I have
sacrificed lot of my brothers and sisters, and maximums are hold master degree, and they are now in government service. And I am very much proud for them, because if they have not sacrificed for me, almost this position is not belonging at present moment for me. My father's dream was when I have got a government job. That was his dream, because he is struggling for his other kids. But finally, I did his primary dream, became a class 1 government officer. But I was not financially sound in a government service. You know, there are limited income. But thanks God and Mr. Ash, they gave us such kind of tremendous opportunity for financial freedom through on passive. Now and in future, I will be able to help our neighbors. In my service time, always I help in my family, sisters, brothers, but I could not help our neighboring people. But in this moment, not only me, we all on Pacifians are very much lucky. We will be able to help our neighbors, even though our society, even though our country, as well as all over the world. And already I have decided study foundation, it will, and our Oble is very much. We are this, thanks Allah, thanks Ash and all friends. And that was my short. थैंक यू वेरी मच नजरुल हक सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से স্যার आपकी ভয়েস बहुत ही ব্রেক हो रहा है। আপনার ভয়েস খুবই ব্রেক হচ্ছে। এজন্য আমরা অতটাও ভালো করে লাস্ট আপনার কথাগুলো শুনতে পারিনি। তো অনেক, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার মূল্যবান আ আ স্বপ্নের বিষয় এবং আপনার সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের কিভাবে সম্পর্ক ছিল, কতটা আপনি আন্তরিকভাবে প্রতিটা সদস্যের সাথে ব্যবহার করেছেন এবং আ আপনার যে স্বপ্নগুলো আপনি পূরণ করার জন্য আজকে চাইছেন, আমরাও অন্তর থেকেই চাই আপনার প্রতিটা স্বপ্ন পূরণ হোক এবং আপনি আরো অনেক উন্নত হন। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट आज के पार्टिसिपेंट एंड हमारे गेस्ट के पास हम पहुंच जाते हैं और माशिदुर रहमान सर, आप तो हिंदी समझते हैं तो आपको हम हिंदी में ही लास्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप अपने फैमिली के साथ आपकी हो सकता है भाई बहन माँ बाप और भी फैमिली मेंबर्स आपके साथ जितने भी हैं, आपका मतलब जब आप चाइल्डहुड पर थे तो आपका व्यवहार संपर्क कैसा था? और नेक्स्ट उनके जो एक सपना था हो सकता है गरीबी के वजह से या फिर मतलब हो सकता है कोई ऐसा कारण जिसके कारण वो सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है या फिर आप उनकी जो सपना है ड्रीम्स है, इसको आप कितना मतलब पूरा करना चाहते हैं या फिर अभी के आपके जो सपना है वो आप कैसे पूरा करना चाहते हैं? सर प्लीज़ आइए और आप भी डिस्क्राइब कीजिए। Thank you very much. I am Mohammad Mastur Rahman. I always try to make a webinar different, exceptional, and extraordinary. So I am enjoying this webinar. This is also very extraordinary webinar. Actually, मेरा 3 भाई है, मेरा बहन नहीं है और मैं
सबसे छोटा है, छोटा होने के नाते सबने हमें बहुत ही प्यार दिया है। और हम तीनों भाइयों के बीच एज का जो गैप है वो गैप नहीं है, वो हम लोग 4 सालों में 3 भाई है, इसीलिए हम तीनों भाई एक दूसरे की फ्रेंड जैसा फ्रेंड जैसा था और फ्रेंड जैसा ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मेरा जो भाई है वो हमें पढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्कूल ले गया छोटा से, इसीलिए मुझे मेरा कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ हम दोनों भाई के लिए। ये मेरा बहुत ही लाइफ का अच्छा सेशन है। और मेरा जो पिताजी है, सो आई वुड लाइक टू से सम एक्सेप्शनली जो है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने मन मेरे मंजिल है कहाँ। सबके लिए मेरा मंजिल है ऑन पैसिव, मेरा मंजिल है ऑन पैसिव। और मेरा पिताजी और माताजी उन दोनों ने बहुत ही अच्छा तरीका से वाकिफ हल है कि मैं ऑन पैसिव के साथ हूँ, ऑन पैसिव को प्यार करता हूँ, ऑन पैसिव के लेकर ही चलता हूँ। आज मैं जो वेबिनार में हूँ, ये मेरी पिताजी, माताजी, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, सबको पता है कि मैं आज एक वेबिनार में हूँ। ये मेरा अचीवमेंट है और मेरा पिता और माताजी ने बहुत ही आशीर्वाद करता है कि अनपैसिव में लगे रहो और अनपैसिव एक दिन तुम्हें इस मकाम में ले जाएगा जहां तुम हजारों लोगों की मुंह में हंसी ले आ सकते हो, हजारों लोगों को तुम मदद कर सकते हो। अब तुम्हारी पोजीशन खराब हो सकता है, तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम हजारों लोगों की मुंह में हंसी फुटा सकते हो और हजारों पेशेंट को इलाज करवा सकते हो। ये है मेरा पिता और माताजी का जो ड्रीम है, वो मैं पूरा करने के लिए उन लोगों ने हमारे साथ है, उन लोगों ने अच्छी तरह से वाकिफाल है कि अनपैसिव क्या है, अनपैसिव क्या करते जा रहा है और उसका बेटा क्या करते जा रहा है। सो मेरा मंजिल है अनपैसिव। थैंक यू सो मच। रेहान सर, मैं यहाँ 2 शब्द कहना चाहूंगी। बहुत खूब मसूदर सर, बहुत खूब। यहाँ पर आप आज रेखा जी एक चीज देखकर बहुत ज्यादा अपने आप को हम लोग मतलब महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस हो रही है कि शायद हमने प्राइसलेस मोमेंट विद फैमिली बहुत सही टाइम पर बनाया, क्योंकि बहुत जरूरत है इस चीज की। और एक ह्यूमन, एक लाइफ की जो पावर होती है वो फैमिली होती है। हम लोग ऑन पैसिव में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी, लेकिन अगर किसी के पास फैमिली नहीं है और फैमिली के साथ एक भी खूबसूरत एक बढ़िया फ्रेंड नहीं है, तो वो चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी पैसा आ जाए या कुछ भी, लेकिन वो बिल्कुल अधूरा है। और सुशांत सर, यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, हमारा एक ही मोटिव था इस चैनल को बनाने का कि लोगों तक हमारी जर्नी, आपकी जर्नी के साथ लोग सीख सकें कि किस तरीके से स्ट्रगल करके लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल, आज की जनरेशन छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ मतलब परेशान हो जाती है, छोटी छोटी बातों में बहुत चीजें खो देती है और अलग होने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आज यहाँ आप सबकी जर्नी, आपके चाइल्डहुड की जर्नी को सुनकर, आपकी लाइफ की, सभी की लाइफ को सुनकर एक मोटिवेशन मिलेगा लोगों को कि यस, क्योंकि मैसेज जरूर जाता है किसी की एक लाइफ से। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें कि बहुत सारे मैसेजेस हमारे व्यूअर्स को मिले हैं कि यस, लाइफ में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अगर फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे विल पावर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Swati ji. And the priceless moment with family means every moment. Today we captured all the friends, the 3 friends of On Passive. They are not childhood friends. That matters because
we are in a business, and the best friends in the business, the lifetime business and the lifetime friends together will make this business grow like anything. So if you have friends, on passive friends, cherish those moments, and it becomes the priceless moments of your life. Cherish every moment, because we are into a vision, not only the business. We are into heart-to-heart connection with the on passive. We are connecting the world. We have to reach out to billion hearts, and that's the reason we have to build our every relationship strong with on passive. Thank you so much for being the part of this show today, wherein priceless moments with family means friends, siblings, parents, and the moments which we have shared with on passive, because we are making history, and this is history in itself. Every moment of on passive is history. So we, the captured moment here on this priceless moments, you will always remember them whenever you would watch. The misunderstanding which you may have had, or you would have any time, this priceless moment will bring that freshness of your friendship, and you will always have that strong friendship all every time. So I would just like to ask Engineer Shishanta, did you ever think, or had you ever thought that you would ever get chance with your friends to enjoy this moment with priceless moment? Actually, it is another surprise to me. As I was seeing so many surprises in the on passive, so I just think rest of my life, rest of our lives are full of surprises. So it's also a surprise to me. I never thought actually, but definitely we are dreaming so many things. We are not sure that what will come, when, what and when, what will come in our life. We don't know actually. So it is all are unpredictable, but we are sure that so many good things, good moments, good wealth are waiting for us. So it's really, really priceless moments we just enjoyed with Rekhaji, Satiji, and also Mr. Rahan. Is so nice, his presentation and translation. We are really, really happy for being with you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच सुशांत सर, आपसे मिलकर और बातें कर बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं था कि ऐसे एक मतलब सेशन के माध्यम से आपसे बातें करने का मतलब चांस मिलेगा। मैं बहुत दिन से आपसे बातें करना चाहता था, और प्राइवेटली आपकी नंबर मैंने बहुत सारे मतलब ऑन पैसिव फाउंडर से माँगा भी था, तो किसी के पास नहीं था, कोई देने के लिए मतलब राज़ी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आज आपसे मतलब बातें करने का भी मतलब हमें चांस मिला, और आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो मतलब डेडिकेशन, आपके अंदर जो लीडरशिप ऑन पैसिव ने आज जगाया है, और मैं जो देख पा रहा हूँ आज, पूरे दुनिया जो देख पा रहा है, ये बहुत बड़ा कुछ है सर। तो आपके लिए हमेशा हम प्रे करेंगे, आप खुश रहिए, और हमेशा आप ऑन पैसिव के लिए और भी बहुत बड़ा कुछ कीजिए, आपके ड्रीम्स को आप फुलफिल कीजिए। और हमारे बीच शिखा मैम थे, तो मैम को भी हमारी तरफ से एप्रिसिएशन रहेगा, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनका भी हर एक सपना पूरा हो। नज़रुल हक सर है, उनके लिए भी दुआ रहेगा कि सर की अभी थोड़ा फ़ीवर है, तो सर को भी मतलब आराम मिले, और सर बहुत जल्दी हमारे बीच फिर से सेशन पर अवेलेबल हो। नेक्स्ट माशदुर सर एंड उनके जो बेटा, उनके लिए भी बहुत दुआ रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि वो भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाए, और हमारे साथ हो, हम साथ मिलकर इस पूरे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करें, क्योंकि हम सारे ऑन पैसिवियंस एक-एक ह्यूमैनिस्ट, मानवतावादी है, और हमारा फर्ज बनता है
पूरे मानवता को अपलिफ्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक you from bottom of my heart, रेखा मैम एंड स्वाति मैम, आप दोनों की प्यार के लिए और आप दोनों की डेडिकेशन के लिए बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और आप सभी के साथ हो रहा है। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप दोनों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। नीलम मैम को भी मैं मतलब बहुत-बहुत कांग्रेट्स करना चाहता हूँ कि मैम भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे सेशंस को मतलब अटेंड कर रहे हैं और कंडक्ट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम एंड ओवर टू यू, वाइंड अप की तरफ आगे बढ़ते हैं। Yes, we have Nazrul sir. उनका हैंड रेज है, वो जरूर कुछ शेयर करना चाहते हैं. Over to you. Thank you, ma'am. I want to share a wow moments with you, if you allow me. I have a wow moments. Today is a tremendous moment, but in my previous life, with my life partner, when we read in Rajshahi University, we felt in love, and finally we got love marriage. I have promised with her when I am solvent, we will visit it in Agra Taj Mahal, India. And Alhamdulillah, finally we have visited 2013. And that was my fulfill of commitment at one moment. And after that, today, I think it is another moment for me. And all credit goes to our panelist, Rekha ma'am, Raihan sir, Engineer Sushanto, all of our panelists. I'm very much happy to be here with you. Thanks. Salute. Thank you. See you again in our Bangladesh webinar as well as your webinar. Thank you. Rekaji, 30 seconds, if you allow me. I don't exactly time. Yes, definitely. You have more than 30 Yes. seconds today. I'm just telling. Don't the fa- adding me. Engineer Sushanto, don't Sir, adding me. your platform. Actually, from the beginning, I said that all the founders are leaders, but all the leaders are not founders. So we are here with all the leaders, and today what we achieved in our country, I should say, that was a great support of our great friend Nazrul Haq, Masudur Rahman, and so many other friends too. So we are trying our best, but one message to our founders, that we are very much hungry for money. We are very much excited that we are just making hurry up to getting money. But I should say that we will get wealth. We will get wealth from one passive. Wealth doesn't mean only the money. First of all, I should say that we'll get the mental peace. Whenever we'll do any humanitarian work, when we'll able to help to someone else, definitely we'll get some mental peace that cannot be by any amount. So one passive is going to give us that. Of course, we'll get the money. We'll have if we have the money, definitely we'll have the time freedom. And if we have the money and time, definitely we'll have the status. That is, society will give us the status based on our money and time. And if we have enough money and time, definitely we'll look after our good health. So we'll always remain healthy, and we are gonna have everything from on passive. But we should not focus on the money. Rather, we focus on our responsibility, on our duties. Some time will come that money will run behind us. We no need to run behind money. Thank you so much. And we are really thankful and grateful to Almighty and our CEO Ash Mufare for giving us such a nice divine platform that we are having chance to serve the people. Thank you so much. Over to host. Wow. This is one of the best friendship moment. And
honestly, yes, on passive is not only about apples. On passive is not only about getting rich or wealth. On passive is about value. You cannot buy your value. You cannot buy your status, and you cannot be haunted. You will be haunted, right? So you cannot be haunted even if you spend $1 billion. So understand what you very well said, Engineer Shashanta. I really admire the way you kept these words. And honestly, all the brand ambassadors, we are going to win. Victory is with us. But yes, value yourself first and value your time, because time is precious. And don't waste time with the things which are not required. Be patient and just follow the process. And things are actually, the big things are actually picturized for you. And honestly, the next station is on passive, waiting for us. So we just be ready and prepared, because time would not wait for you. Don't run after the apples. Apples will run after you. But before that, make yourself so strong. अपने आप को बना लीजिए, अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप जो हो वो आपको नहीं पता है, वो आपको पता करना जरूरी है ना? क्योंकि आप किस किश्ती में हो, that ship is the biggest ship of this earth, the internet ship. And thank you so much everyone that आपने एक मतलब I just requested and you said yes, I would be there. Thank you so much. That is family. Final closing remarks, if you allow me. Yes. A quotation, a quote, but that is not my quote. Napoleon Hill, we know that guy. He said that patience, persistence, and perspiration are the unbeatable combination for any success. So we have to be patient. We should remain with the process of learning, and definitely we'll do our best from our position to promote our company, to promote our products to the public, and that will bring our success. Thank you. Over to Rekhaji. Thank you so much. Yes, before we end, एक गाना तीनों मिलके गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं 2 minutes के लिए, and then we'll close. यादगार मोमेंट, यादगार मोमेंट. यस, अगर इसमें शिखा मैम भी इन्वॉल्व हो जाएं तो बहुत मजा आ जाएगा. ख्याल से उनका नेटवर्क इशू था. No, she's here. Yes, all the 4 of you. Yes. Bengali song will work as well. Yes. Yeah, Masud Rahman, you can start. Please. क्या गाऊं? तो कुछ नहीं आ रहा है. सर आप एक काम कीजिए, और हमारे अरुण धमीजा जी की अगर गाना आपने सुना होगा, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, वो ही गा दीजिए. या दोस्ती के ऊपर गा दीजिए. हाँ. So let me start. Yes. Huh? Okay. Yes. So it's a very heart-touching song, but it is in Bengali. But you know the Indian Bengali great singer Manna De. It's with due respect. I'm just trying to sing the first few lines. Jodi কাগজে লিখো নাম, কাগজ ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লিখো নাম, পাথর ক্ষয়ে যাবে, হৃদয়ে লিখো নাম, সে নাম রয়ে যাবে। যদি কাগজে লিখো নাম, কাগজ ছিঁড়ে যাবে, please write the name of one person in your heart. That will be permanently in you. Please write the name of one person and our CEO Yash Mopare in your heart. Thank you.
so much. So on Thank you behalf- so much, everyone. Thank you, And yes, Anjana we are Sushant. so in Thank it you. to win it. We are so in Yes, it to so win in it. it We are And so in it to win it. We are so thank in you, it to win Rehan it. sir. for Have you, a Rehan. nice day.